Hello, my name is Shitiz Srivastava and this is my video vlog. So there's so many things that we learn every day, and every day is a learning experience, and this is for me the most important thing that I do. And I make sure that I learn something every day. And recently I learned something very important which I already knew, but the thing is, if you do not revise your concepts, if you do not revise the things that are already inside your mind, then you tend to forget them. And that happens to everyone, and that happens with me a lot of times. एंड सो बेसिकली वो एक चीज़ है जो बहुत सारे लोग जिससे सफ़र करते हैं, और वो चीज़ है कि लोग ना एंगर पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अपने अंदर से ग्रीड हटाने को कोशिश करते हैं, जेलिसी हटाने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन हटाने की कोशिश करते हैं। टर्न्स आउट दीज थिंग्स आर एक्चुअली गुड थिंग्स, and no one is going to tell you that these things are good things, because everyone thinks that these things are actually putting you into an uncomfortable zone, and that is why a lot of people struggle to remove these things from your life. But the thing is, uh, if you remove these things from your life, then you actually get into this comfort zone. आप एक ऐसे कंफर्ट जोन में जाते हो जहां से आपके लिए निकलना मुश्किल होता है. बट द थिंग इज, इफ यू वांट टू बिकम अ हीरो, देन यू हैव टू फेस द ऑब्स्टिकल्स, एंड ऑब्स्टिकल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू हैव दीज इमोशंस. सो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने हमें झूठ बोलना सिखाया है, गुस्सा देना सिखाया है, कंपटीशन दिया है, ग्रीड दिया है, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा. ऐसे तो नहीं है ना कि ज़बरदस्ती कुछ भी हमको दे दिया गया. अगर वो चाहता कि हम लोग हमेशा खुश रहें, तो हमेशा वही चीज़ देता ना हमारे सर्वाइवल के लिए. पर ये चीज़ें भी दी हैं. प्रॉब्लम क्या है, लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. आपका जो एंगर है आप उसको चैनलाइज़ नहीं करते हो, आपका जो ग्रीड है आप उसको चैनलाइज़ नहीं करते हो, आपका जो कॉम्पिटिशन है आप उसको चैनलाइज़ नहीं करते हो. मुझे लगता है अगर आप कॉम्पीट नहीं करोगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? व्हाट विल बी द यार्डस्टिक टू व्हिच यू विल कंपेयर योर प्रोग्रेस? यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. यू एंड योर कॉम्पिटिशन एंड योर सक्सेस इज़ रिलेटिव थिंग. वो रिलेटिव है. आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हो, तभी तो आप आगे बढ़ने का सोचोगे. इफ़ यू हैव नो कॉम्पिटिशन, देन नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. And more than that, I think that lies are good. What are films? Films are lies. Films have never existed. तो फिल्म्स को अगर आप देखो तो आप कहोगे कि लाइज को बहुत ही सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है. वहाँ पे एक फिक्शन क्रिएट किया गया है, समथिंग दैट डजंट हैपन. इट इंक्रीजेज योर इमेजिनेशन बेसिकली. सो एवरीथिंग इफ यूज्ड इन प्रॉपर चैनल, इट विल बिकम बेटर. जैसा कि घातक पिक्चर में अमरीश पुरी या सनी देओल को बोलते हैं कि बेटा क्रोध पे काबू रखो. तो क्रोध पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है. आप एंगर को यूटिलाइज कैसे करते हो वो ज़रूरी है. बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि जब आपको गुस्सा आता है, तो आप रिवेंज वाले मोड में चले जाते हो, आप सामने वाले से बदला लेना चाहते हो. बट व्हाट इफ यू से, इफ आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ अ लॉट बेटर देन द पर्सन whom against whom I'm angry. So this is what I feel. And for last 10-15 days, मतलब उससे पहले मेरा शेड्यूल बहुत सही था. I have made a set of affirmations, goals which I always talk about, and those things have helped me tremendously. मैंने एक गोल शीट भी बनाई थी जो मैंने आपको शेयर भी करी थी. तो उस गोल शीट को मैंने लास्ट दिसंबर में बनाया था 2020 के लास्ट 6 दिनों में. एंड इट वॉज अ 90 पेज बुक विच आई क्रिएटेड, एंड इट हैड ऑल द गोल्स एंड एफर्मेशंस एंड ऑल द टास्क शीट्स दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ फॉर 2021. And I wasn't following any of them. The last 10 days I've been doing anything, and I was just pretty much wasting my time. And then something happened, something which miraculously turned things around. And I wasn't making videos, I wasn't reading any books, and I wasn't gaining anything new, and I was just passing my days. For last 10 days I was feeling fucking irritated. एंड आई वॉजन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव अ हैबिट कि मैं 5 बजे सुबह उठूँगा और मैं उठ के मंदिर जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं जॉगिंग करने जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं कुछ किताबें पढ़ूँगा, फिर आर्टिकल्स पढ़ूँगा या कुछ वीडियोज़ क्रिएट करूँगा. एंड बिकॉज ऑफ माई बैड लाइफ स्टाइल, only for last 10 days I was unable to create videos, and I was making constantly, I was making these excuses to the group, the WhatsApp group that I have. And there were so many subscribers who were asking me कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो. And this is why I was not making videos, because I was deluded, and I was in a bad state of mind and body and discipline. And then something happened, something really 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 wrong happened. And then things turned around, and today I got up early in the morning, and I was so irritated last night. And because of that anger, because of that irritation, because of that irritating thing that happened with me, I decided that I'm going to change it. I'm going to make a change, tremendous change to my life. And today I got up at 5 o'clock in the morning. Then I went for jogging. It is tremendously cold in Noida, but I still wake up. I woke up, sorry, not wake up, woke up. I woke up and I went for jogging. फिर मैं मंदिर गया, फिर मैंने अपना नाश्ता किया, फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें करी, फिर मैं जल्दी से तैयार हुआ because I have to go to office as well. And then I decided to make videos which I have been avoiding for such a long time.
And that is, I think, is one of the most important thing that people don't understand, that all these things, all these emotions, all this thinking, part of thinking that God has given us, has to have certain meaning. इट कैनॉट बी लाइक सिर्फ दे दिया है और आपको इस्तेमाल करना है। नहीं, आपको अगर आप बहुत गलत तरीके से हंसते हो, सबके सामने सिर्फ हंसते रहते हो, देन पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। तो हर इमोशन को राइट तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे ऐसा लगता है, दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट आई हैव लर्न इन माय लाइफ, दैट यू हैव टू यूज योर इमोशंस टू योर बेनिफिट। अगर आपके अंदर गुस्सा है किसी चीज़ को, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करिए। अब मैं अगर पलट के अपनी लाइफ की तरफ देखूं, तो पीछे जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जब मैंने अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लिए हैं, वो मेजर डिसीजंस तभी लिए हैं जब मैं लाइफ में कहीं डीमोटिवेटेड था या डिप्रेस था, या फिर मेरे को लगा था कुछ नहीं होगा आगे, और या तो ऐसा था कि मैं गुस्से में था। जैसे मैंने एडिटिंग के बारे में आप लोगों को कई वीडियोज़ में बताया कि एडिटिंग मैंने कैसे सीखी। किसी एडिटर ने मेरी बेइज्जती कर दी थी, एंड आई वाज वेरी एंग्री, एंड और मैं घर आया, मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और मैंने लर्न करना शुरू किया एक ट्यूटोरियल से, और मैंने फिर एडिटिंग सीख ली। आज वो आदमी शायद मेरी ज़िंदगी में नहीं है, और शायद मेरी उससे बात भी नहीं होती है बेसिकली, शायद क्या उसमें बात ही नहीं होती है, मैं वो तो मुंबई में रहता है। बट द थिंग इज, बिकॉज ऑफ दैट एंगर ऑन दैट पर्सन, आई लर्न एडिटिंग। Same thing happened with the VFX. I didn't want to learn VFX. I was not a technical guy, but someone quoted me a huge amount for my first film, and I wanted to finish the film. तो वो मैंने खुद से लर्न करना शुरू किया. So basically the funda is same. Funda is same, that you channelize your emotions to a particular way, in a particular direction, so that it helps you, it benefits you. And that is, I think, the core idea of those emotions that we have. And I don't think that we should take them very negatively like everyone else says. I think if we take them negatively, we are going to live in the comfort zone. We are going to live in this utopia of world where nothing is going to happen. We will always be in the comfort zone. What happens when you are happy? When you are happy, you are not doing anything. And happiness is a state of mind which stays just for a while. थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस का स्टेट आता है, उसके बाद वापस आप उसी जोन में चले जाते हो जहाँ परेशान होते हो. Why? Because happiness is not something to stay. Happiness is something that you achieve after you do something, but then you move on to something else. And that is why you are constantly in search of happiness. And people say that this guy is in eternal bliss, or this guy is in eternal state of happiness. You shouldn't be in eternal state of happiness, because if you are in eternal state of happiness, then you will never progress in anything. And this is my thinking. You might agree with it or you might not agree with it, but that is my thinking, and that is what is helping me. Because when you look back in the past, statistical data about your own life, I'm not talking about other people, I don't care about what other people think, but when I look back in my own life, this is what I feel, this is what I see, this is what I believe. And this has helped me tremendously in my life. No matter where I am right now, no matter what I'm doing right now, whatever I am right now has been the result of all these emotions. I'm not here because I was throughout happy in my life. No, I haven't been. I'm here because there has been moments in my life when I decided that I'm going to do something about it. Where I decided that things are not going right and I have to do something about it. And that's the change that I brought in myself. So the crux of the matter is that if you really want to do something, then channelize your emotions, because you cannot escape them no matter how much you try, no matter how much you try to run after happiness. It's a futile effort, in my opinion. Do not seek happiness. You will get it if you keep on doing things that you really, really, really want to do. And that is the core idea of life. So on this note, I want to end this video, and I hope I have explained it to you in as much capacity as I could. आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, एंड डू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.